Hello, viewers. Thank you so much for tuning into Amrina's session. As always, you know Amrina gets promising notes at your end. And this time as well, yes, indeed, promising guest, but not one. Two of them. Amazing. What can I say? Amplify with Amrina. Always strive hard to get someone on board who has got some mystery behind of getting onto this kind of line, whatever they have chosen. Now, we're talking about comedy. It has always been a factor of farce and balance and satire. Yes, I'm talking about a comedy style which actually projected millions across the world. Now, it might be little more when I say millions, but trust me, from every corner of the world, people actually recognize him like in Lauren Hardy couple all together, every time together. And trust me, their jokes are a little apart. It's not about using only Hyderabadi language, but it's more about understanding what is going on in your daily life and then a touch of it. They make sure that they definitely draw your jaws down to it and then you smile out. Now put your hands together to welcome on board in my session all the way from not Hyderabad, not America, but from Riyadh. Yes, I'm talking about Deccan Dolls, if I'm not mistaken, Azhar and Ibadur in my session today. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our viewers and Amrina ji. Thank you so much for having us on your live session. It is an overwhelming feeling for having both of us in your session. So looking forward for it. हम लोग ये सफर शुरू करे थे इसीलिए कि अमरीना जी के सेशन में जाएं। जरा जोर से बोलिए बहादुर wanted to hear once more. हम लोग ये लाइन क्लोज इसीलिए करे थे हम लोग चैनल इसीलिए फॉर्म करे थे कि we had a vision that one day, inshallah, through our channel and through our this journey, we will one day come on this live section. Inshallah, inshallah. It's been a pleasure. Well, not Thank you. wasting much of your time, and Yes. thank you so much, viewers. They have been totally busy the whole day, and they just got this particular time for a live interview. Azhar, to make it a little short and sweet, and Ibadur, just tell me why you people have opted for comedy in particular. Because नॉर्मली ऐसा होता है दैट यू नो आप लोग की जो इस वक्त यू आर ऑन अ स्टेज लेवल ऑफ सच काइंड ऑफ जनरेशन कि आप लोग काफी मैसेजेस दे सकते हैं लेकिन आई नो आपके मैसेजेस बहुत मीनिंगफुल होते हैं व्हेन आई सॉ देम बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर एंड व्हाई कॉमेडी Well, particularly, Imran ji, as why comedy? Because as in our real life, me and Ibad are actually those kind of comedy busters for our whole childhood group. Yeah, so whenever we whole group of friends meet and the families and everywhere in our friend circle, so we are those people who always keep those ticklish jokes and everything. We are the one who try to be those jokers of the group, okay, who are cracking jokes and everything and just laughing hard as we can. So we like I'm basically from the if we come down to the lane, like our history of both of us, we are childhood friends, so we have been studying in Riyadh itself since our childhood. So one day, one fine day, Ibad is always having this kind of, hobby of making videos and writing and all this thing. So one time he just comes down to me and he is like, Pathe, why don't we, just try to bring it on the screen, what we do? I was like, what do you mean what we do? We try to bring it on screen. Like, if sometime I'm the only one who's getting beatings from you and all these kind of things. अब ये सब अगर we try to show it on the screen yes तो अच्छा नहीं yes है तो he was like नहीं नहीं not like that, we'll try to make these kind of dub smashes. So at that time and three years before, you remember once one application dub smash that used to yes come, yes we yes used to yes have yes lip syncing. Yeah, yes 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 lip syncing of all those dialogues. So he started making those videos on dub smash. So then he said let's just make a small video of 2-3 dialogues, like on park in one of our friends place. We made a very small video and that went viral on Facebook, and that actually was a booster for us, that we said we were like, let's make it on a bigger larger scale. I remember at that time first video we made it on a normal video on a phone, lock a normal mobile phone, and just posted on a Facebook, like just to know that people are loving our content, are they liking it, are like.
So that was a very good response from Facebook and all our friends and family. And they said like, "Nahi, why don't you guys make it in a proper channel, YouTube pe banao?" And then that's how it started. Wow, great, amazing, Yes. great to know. So, Azhar, normally ऐसा होता है ना कि थोड़े से happening names रखते हैं, and then people were like, सुनते ही हंसी आ जाना चाहिए एकदम से. So, why you kept like Deccan Dolls? मतलब इसका कुछ बताइए. Why this name came and how did it happen? डेक्कन ड्रोल्स बेसिकली हम लोग का ये था कि हम लोग सोच रहे थे कि व्हाट फैंसी नेम कैन वी नेम और चैनल समथिंग लाइक दैट. तो हम लोग का था कि अपना ताल्लुक शुरू से दक्कन से रहा है, हैदराबाद से, Yes, और अपनी yes. लहजा अपना जबान जो है दक्कनी लैंग्वेज ही रही है. तो नॉट फॉरगेटिंग द रूट्स फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग, सो इट वाज लाइक लेट्स कीप दक्कन. तो पहले से शोर था, ठीक है, लाइक दक्कन तो रहना ही है क्योंकि अपना पहचान है. हम लोग हैदराबाद रखना सोचे हाँ. थे, लेकिन वो हैदराबाद रखने से ना आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. इबादत थोड़े सा हाई पिच करिए. जी. हैदराबाद रखने से क्या होता है कि हैदराबाद तक लिमिटेशंस हो जाती है कि जी आसपास जी जो अपने जी कई जी सारे शहर हैं, जी आप जी उनसे जी. हो जाते, जैसा कि अब हैदराबाद बोले तो फिर आंध्रा अलग हो जाता, ट्रू और ट्रू ट्रू. आसपास के जो है वो नहीं होता. हम लोग चाह रहे थे कि डेक्कन यानी कि हमारा पूरा एरिया कवर होना, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसा कि हमारे पास एक कैरेक्टर है याकूब, ही इज फ्रॉम विलेज. ओके, तब आप हैदराबादी बोल के गौंटी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं यार हैदराबाद में तो ऐसा नहीं होता. So we want to cover the complete, the area of Deccan. And the first question आप जो पूछे थे कि उसमें एक चीज सर नहीं बोले, भूल गए. आप पूछे कि कॉमेडी क्यों जब मैसेज दे हाँ सकते हैं. हाँ जी जी. तो जी. हम लोग का इरादा ऐसा था कि ऐसे आपको YouTube पे कई सारे वीडियोस मिलते हैं जहां आपको मतलब कई मतलब मोटिवेशनल जो स्पीकर रहते हैं उन लोग बैठ के आपको बोलते रहते हैं. तो उन लोग को सुनने ना, बच्चे जो रहते छोटे, उन लोग को सुनने में बोर होता. तो हम लोग मैसेज को ही क्या करते हैं, कॉमेडी के पैकिंग में करके दे देते. तो बच्चे क्या है, खुशी खुशी ले लेते हैं और उससे उनको एक मैसेज पहुंच जाता, उनको खुद को समझ में नहीं आता. यस. तो ये हमारा आइडिया था एक मैसेज पहुंचाने का. अगर आप स्ट्रिक्टली अगर एक मैसेज है इसको सुनो, इससे एक सोशल अवेयरनेस है, तो काफी लोग बोलते हैं यार सीरियस बात नहीं सुनना है. हाँ तो हम ट्रू लोग ट्रू. उनको क्या करते हैं, कॉमेडी की पैकिंग में डाल के उनके दिमाग में डाल देते, तो ये चीजें इजीली छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच जाती. हाँ पब्लिक हाँ. का ऐसा है कि ऑलरेडी जो है मोटिवेशनल ज्ञान बहुत मिल रहा. वी नीड समथिंग कॉमेडी. सो ट्रू व्हाट ट्रू. वी ट्राई टू डू इज लाइक try to have a little hilarious part in it, and a message, social message as well, to the public, to the youth, to the kids or whoever, उस Well, हिसाब से. well said, well said. So who's the person behind, मतलब ये concrete काम कौन करते हैं, and then later on the logistic part, who's the main man behind this? किसका दिमाग ज्यादा ऐसा चलता है? हमारे पास ऐसा हाँ, कुछ बस भी नहीं है ऐसा कि तो जो कुछ दोनों जो है है का. नहीं. दोनों का ही है. देर इज मतलब इनिशिएट इज ऑलवेज फ्रॉम इबादत. हम्म. इनिशिएट उसमें करते लाइक वो इफ एक यू गेट एन चिंगारी जो आइडिया, रहती ना, वो एक चिंगारी में लेके आता हूँ. अब वो लेके आके फिर हम उसको लोग डिस्कस करते हैं कि ये डिस्कस चीज करके. पे कुछ सोचते हैं. तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन होते हैं. ये जो आप लोग को वीडियो में 7-8 मिनट दिखता, उसके पीछे हमारी कई रातें रहती, जिस पे हम लोग डिस्कस करते नहीं हैं. नहीं ट्रू ट्रू, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं. जी. जिस पे हम लोग स्क्रिप्ट लिखने से पहले कई चीजें ऐड होती, फिर स्क्रिप्ट लिखते वक्त उसमें से कुछ चॉप ऑफ हो जाती, फिर शूट करते वक्त कई चीजें ऐड होती, इम्प्रोवाइजेशन रहता, फिर एडिटिंग रहती, फिर साउंड इफेक्ट्स रहते, कई चीजें ऐसे रहते. तो फिर लास्ट में आप लोगों की प्लेट पे आता वो चीज तैयार होके. तो ये एक वीडियो 7-8 मिनट के पीछे कम से कम एक 40-48 आवर्स की मेहनत रहती. बिल्कुल. आपका सबसे ज्यादा हाई रेटेड वीडियो आई बिलीव रमजान की इफ्तारी का हुआ था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो आप वो भी हुआ अगर था. यूट्यूब से अगर एंड आप कंपेयर करेंगे तो सऊदी रिटर्न सऊदी रिटर्न ज्यादा हुआ था. सऊदी रिटर्न ज्यादा ज्यादा है. हुआ जी था. हाँ. ओके. रमजान की जो है वो वायरल बहुत हुई थी यूट्यूब पे बहुत व्हाट्सएप बहुत पे. वायरल हुई वायर, थी. हाँ, व्हाट्सएप पे हुई थी, एंड फेसबुक पे भी हम लोग का फेसबुक पे काफी 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 रमजान काफी. वाली. जी हाँ. जी हाँ, क्योंकि हुई आप थी. नेचुरल जो बिहेवियर है था जी. नॉर्मल पब्लिक का, वो आप जी. लोग प्रोजेक्ट जी. करे हैं बहुत अच्छी से. अच्छा इबादत, आपसे एक सवाल है. नॉर्मली मतलब ऐसा होता है कि एक इंसान को देखने के बाद ऑटोमेटिकली यू फील लाइक लाफिंग कि अब इसके पास से कुछ ना कुछ जोक्स तो क्रैक होंगे ही. ऐसा आपके ये शख्सियत में ये चीज है. आई हैव नोटिस दैट. इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंट आई एम गिविंग यू, बिकॉज रुलाना बहुत आसान है, बट हंसाना इज लाइक अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क, आई बिलीव, यस. मुझे ऐसा लगता है. यस. लेकिन यस. आपकी जो सिग्नेचर हेयर है वो आपके ऊपर और सोने पे सुहागा कर देता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज. यस. एक्चुअली वो डिसीजन जो था, लाला के जो हेयर है
तो डिसीजन ऐसा था कि एक्चुअली आई एम बाल्ड, तकरीबन जो है बाला छोटी है, जी सऊदी मालूम अरब है, में मुझे रहते पता हैं। है जी, पता है। हाँ, तो मतलब सऊदी में साफ है। जी। सऊदी में रहने पर जो है ये चीजें आपको जो है मिलते हैं, खाने के साथ साथ ये भी चीज आती है आपके साथ कि आपके बाल चले जाते हैं। तो जी। जब मैं ये कैरेक्टर लिख रहा था तो ये कैरेक्टर पे वर्क कर रहा था, तो मैं कोई भी कैरेक्टर लिखता हूँ तो उसको जो है आईने के सामने ठहर के एक्सप्रेशन देता हूँ कि इफ यू सी, मतलब ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस। किसी की हंसी किसी से मैच नहीं होती, ठीक है, किसी का मुस्कुराना किसी से मैच नहीं होता, ठीक है, किसी का भी नर्वसनेस भी किसी से मैच नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लाला ऐसा सोचता, याकूब ऐसा ऐसा सोचता, समझे। हम्म। तो ये हर चीज अलग अलग रहती है हर कैरेक्टर की। तो मैं जब ये कैरेक्टर पे वर्क कर रहा था लाला पे, तो मैं आईने के सामने ठहर के था हो बोल के कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा दिख रहा था कि सीरियसनेस है। मतलब पब्लिक को ऐसा दिख रही है कि ये एक बंदा एक विलन टाइप है, इस पे मतलब लोगों को ऐसा नहीं होता, कॉमेडी चेहरा नहीं दिख रहा क्योंकि बाल की वजह से। तो मैं बोला बाप, बाल की इसमें जो है कमी है, तो कुछ फनी इस पे बाल लगाया जाए बोल के एक दो तीन विक्स ट्राई किया मैं। तो फिर फाइनली मेरे को ये समझ में आया कि ये वाले जो करली है उसको हम जो है डालेंगे, ताकि इससे लोगों को समझ में आए कि मतलब अपने में मगन है बंदा, मतलब ही डजंट केयर अबाउट द वर्ल्ड कि यस इसको यस। कैसा दिखता है, स्टाइल पे कुछ ज्यादा वर्क नहीं करता, वो पोजा मारना या फिर मेकअप करके रहना, अच्छा खत वत बना के रहना नहीं, उन्हें हौला है, उन्हें अपने उसमें मस्त रहता। ओके, उसको खुद का एंजॉयमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए वो डिसाइड किया था। गुड गुड, वेरी वेल। अच्छा, आप दोनों से इस सवाल कोई भी एक आंसर कर सकता है इस सवाल को। आप लोगों की नजर में ह्यूमर क्या है? ह्यूमर इज मेरे लिए तो व्हाट आई थिंक ह्यूमर इज ब्रिंगिंग स्माइल्स टू दोस फेसेस और मतलब जैसे आप बोले कि हंसाना बहुत मुश्किल है, so I think we are taking the challenge of bringing laughter to those faces and smile to those faces. ठीक है, एंड ह्यूमर हमारे लिए कैसा है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लाफिंग हार्ड, इट्स समथिंग लाइक अरे रिलेटिंग टू योर डेली चीजें, वो मुस्कुराहट अलग आती है। आप देखिए अमरीना जी कि मतलब एक बिल्कुल सही बोल हंसी रहे हैं आप। जोक अलग रहता, जी 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 जी। जोक तो नॉर्मल रहता, लेकिन जब वो रिलेट कर लेता ना इंसान को, तो वो एक हंसी अलग रहती। अरे ये तो मैं कल करी थी, अल्लाह बता दिए, हाँ ऐसा सही, वेरी वेल सेड, बिल्कुल एक सही। बिल्कुल जोक्स तो सही। नॉर्मल कोई भी बोलते हैं, अरे मालूम है क्या रहता है गांव में, एक आदमी रहता, एक बच्चा रहता, ये जोक है। जी एक जी। रियलिटी बेस्ड जोक रहता जो आपको ऐसा हो जाता कि मतलब अरे ना ये बता दिए, अम्मी अपन कल करे थे नहीं। कल करे थे। सही ऐसा, सही ये सही। जोक अलग है। तो वेरी वो है ट्रू। जो आप, हाँ, जो आप घर में घुसते, जो नॉर्मल फैमिलीज में होता, जो अपने डे टू डे लाइफ में होता, जो एक मिडिल क्लास रह दो, कोई भी फैमिलीज रह दो, उनमें उनके घरों में कैसा होता, अम्मा का बच्चे को बुलाना, अम्मा का वैसा डांटना, हम्म। ठीक है, तो वो कुछ रिलेट करते हैं। तो मेरे उससे जो, सो एज फार एज आई, मेरा कंसर्न, मेरे थॉट्स हैं कि ह्यूमर फॉर अस इज ब्रिंगिंग दोज लिटिल बिट्स ऑफ लाइफ रियलिटी वेरी ऑन नाइस। टू द स्क्रीन। Very nice, very nice. I mean, you tried your best to actually project humor according to your यस, style. That's the reason why I यस, asked you this. अच्छा, एक यस। मजे की बात, viewers, I wanted to tell you about these two guys is that इनके videos में कहीं पर भी आपको female character नहीं दिखेगा. Female will be there, but it will वन be, फीमेल वन she फीमेल will टू। be, she will be hidden in any one of them. Now यस, let's explore this and find out why like that. In spite of that, they still rule hearts, they're still making people laugh, and still they've got followers, and people still like them. So iske bare mein bataiye, Azhar ya Ibad or बहादुर, any one of them can say कि लड़की क्यों बहादुर। नहीं है? पहली चीज लड़की का हमारे पास ये था कि हम लोग जब स्टार्ट करे थे वीडियोस बनाना, तो एज यू नो हम लोग सऊदी में हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लिमिटेशंस थे हम लोग के पास कि भाई लड़कियों को हम लोग नहीं लाना चाह रहे थे शुरू में। उसके बाद हम लोग जब काम करते गए तो लोग जो है हम लोग को बोले कि यार लड़की को लेके आओ, लड़की से जो है आप लोग कराओ, डब क्यों करा रहे, ऐसा करा रहे। तो हम लोग को कई लड़कियां भी मैसेज करके बोलना शुरू किए करिए कि हम वी वांट टू वर्क विद यू, ऐसे ऐसे। तो वहाँ मेरे को ऐसा फील हुआ कि अगर मैं लड़कियों को लेके काम करता हूँ तो शायद थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे, लेकिन उसमें ये रहेगा यार Oh, लड़की very की वजह good. से इसको व्यूज आ रहे हैं, Very समझे। good, very good, very well said. I'm sorry, I need to take this as a huge round of applause क्योंकि मेरा second question जो था, आप अपने पहले ही सवाल में इस चीज को आंसर कर दिए. Please go ahead, continue.
तो मेरा ये था कि यार अगर लड़की के ही जो है हम लोग करके बताएंगे और लोगों को ये प्रूफ करेंगे कि लड़की को रखना कोई जरूरी नहीं, लड़की कोई बेकार चीज है ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन लड़की से ही चल सकते हैं ऐसा बताना, लोगों की जो सोच है ना वो मैं बदलना चाह रहा था, समझे। लड़कियों के साथ काम करने वाले कई मेरे यूट्यूबर दोस्त भी है, कई लोग बोलते भी, मैं बोलता यार आप लोग का करो, हम लोग हमारे में कर रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर लड़की के साथ आप काम करेंगे तो द फोकस विल बी ऑन गर्ल्स पार्ट, एग्जैक्टली, समझे, कि मतलब एग्जैक्टली, किसको यस, क्या देना है, इट्स इसको कैसे नेचुरल। पोर्ट्रे करना है, वो होता। तो मैं चाह रहा था कि इसको हमारी हम जो है कंटेंट जो मेहनत रहता, हाँ राइटिंग रहती ना, वो इट गेट्स अ लिटिल faded, because यस, people will focus on the genders rather than on the exactly, writing, exactly, very true, very true, very true, very on solid the point writing. you have put हाँ out. हाँ Truly. So जी हाँ। okay, fine. Now wanted to know something more as well. आपके ग्रुप में आप दोनों हैं, तो उमूमन ऐसा होता है कि people started joining you, और कुछ लोग चाहते हैं कि they wanted to get in your group or in your team, I can say. तो आप वो चीजों को कैसा हैंडल करते हैं? Like how do you, the invitations are open, or you are confined to only two of you and one or two are there with you, simultaneously, who is working on the camera? Naturally, दो लोग से तो इतना नहीं होता है, you need to have a third and fourth and a fifth person as well. तो how do you go about with that? एक्चुअली ऐसे काफी जो है हमारे दोस्त अहबाब हैं और काफी फैंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, और कई बार मेरे को बोलते हैं कि भाई हम लोग जिद्दा में रहते हैं, दम्माम में रहते हैं, ताइफ में रहते हैं, आप बोलिए, हम लोग हाजिर हो जाते हैं, भाई आप लोग के साथ एक बार जो है स्क्रीन शेयर करने का मौका दीजिए। तो मेरा उन लोगों से हमेशा यही रहता कि मैं और अज्जू जो है कोई शेड्यूल पे शूट नहीं करते, ठीक है। आई इवन दिस इंटरव्यू वाज नॉट शेड्यूल्ड, कि मेरे को आधा घंटा पहले बोला जो पता है ऐसा इंटरव्यू है अपने को करना है, मैं बोला ओके ठीक है चला, नहीं, वैसे तो हम लोग I शूट भी want इसी to करते say हैं। to Ajju, to your Ajju, I'm taking that liberty of saying that to him, Ajju. Um, it's like almost like 2-3 weeks. I was in हाँ track with Mr. हाँ Az. Yeah, yeah, yeah. Please हाँ go ahead. मेरे को 2-3 दिन पहले बोला था कि ऐसा है इंटरव्यू, तो मैं बोला था ओके मसला नहीं। तो हम लोग का शूट का कोई शेड्यूल नहीं रहता, तो मेरे को ना किसी को भी जो है ना ऐसा डिस्टर्ब करना दिल नहीं बोलता कि यार आ जाओ कर लेते हैं, फिर कभी अज्जू फंस गए या मैं फंस गया तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता। तो हम लोग जो है जब शूट करने वाले रहते तो वो टाइम पे कॉल करते कि भाई आप अवेलेबल है, आप आ सकते, तो वो लोग आ जाते, तो फिर हम लोग शूट कर लेते। तो इसीलिए किसी को भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि हम लोग का कोई शेड्यूल नहीं रहता। बिल्कुल सही, ट्रू, तो ट्रू. इसीलिए हम लोग जो है मैं स्क्रिप्ट लिखते वक्त भी सिर्फ उतने लोगों की रखता हूँ जितने आ सकते और जितने ऑन हैंड है मेरे पास लोग। Uh-huh. Okay, यस। okay. So you both of your bound is from like how many years now? Mashallah, tabarakallah. Since childhood, सिंस almost चाइल्डहुड। childhood. Almost childhood, Yeah, mashallah. we were Great. like an international Indian school, Riyadh, यहाँ पे जो है famously called ISR. We are ex-ISRians. So we have been studying here in school, and then later on we went to Hyderabad for our further, further studies, pursuing our bachelors and masters, and then we came back again to Riyadh, and alhamdulillah, Mashallah, mashallah. working here as well. Great, great. So how जी हाँ। often do you take out time? जैसा कि अभी इबादुर ने कहा था कि हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता, तो naturally मुझे पता है इतने long hours work करने के बाद automatically then you need to take out the time and then you need to make it, and again at the same time you need to make the satisfaction with the viewers as well कि viewers इंतजार कर रहे हैं, we need to post our videos every week. So how do you do that? आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे। वो दुखती रख पे जो पैर रख के मसलते ना, दैट इज व्हाट इबाद इज फीलिंग राइट नाउ, Oh. बिकॉज आपका जो सवाल है ना वो हिट किया सही जो सही बात को, बिकॉज ऑल दिस रोस्टर पार्ट जो है ना, मैनेजिंग एंड एवरीथिंग एंड टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, इबाद इज लाइक अगर अपने को सैटरडे, एग्जांपल यू आर शूटिंग ऑन सैटरडे, so he's behind me from previous Saturday. अज्जू नेक्स्ट सैटरडे अपने शूट करना है, अज्जू नेक्स्ट सैटरडे करना है, अज्जू नेक्स्ट सैटरडे करना है. So this is how जो है सो ना, he pulls me from every of the schedule, जो भी schedule में रहते उसमें से खींच 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 के जो है सो we get one day, and sometimes it goes to 1.5 or 2 days. कोई अगर लेंदी थोड़ी सी स्क्रिप्ट रह गई, तो ऐसा करते करते वी आर ऑलवेज, दैट्स व्हाट इबाद सेड इज, हमारा कभी भी ऐसा प्लान नहीं रहता कि एकदम हर चीज स्केड्यूल बना के एक रोस्टर बना के कि 5th को अपन ऐसा करना है, ये रिलीज करना है, 12th को ये करना है, 15th को ऐसा नहीं. वी आर लाइक जब भी जो भी वीकेंड मिला, जस्ट जो भी वीकेंड फ्री है, वी आर डूइंग इट.
So it's every week you do it, right? कभी एक आध week miss होता. What miss होता जैसा कि ये week miss हो गया because मैं भी tracking रखी थी तो I was just going through it and थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि एक आध week कुछ miss हुआ if I'm not mistaken. नहीं वो हमेशा जो भी मिस होता वो obviously I'm the whole and sole responsible for it कि मेरे ऑफिस के टाइमिंग्स कुछ ऐसे हो जाते कि I have to tell him let's delay the next week or something. वरना तो obviously Lala bhai is always available on that time what is being given Friday or Saturday हो. Because of my Saturdays, because my working culture जो है Saturdays को I have to be there half day तो that's the reason जो है मेरा Saturday भी जो है मिस हो जाता on shoot. तो Okay, ऐसा करते हुए great to know that. Azhar, जी एक सवाल है आपकी तरफ. I want you to answer this. Bollywood is known to be a very, say, like happening place for any kind of an artist, whoever is there, yes in yes respect to any field. So, yes any yes point of time, ऐसी feeling आई आपके पास कि if I get an opportunity, if both of us are liked by them, will you put your step into that journey of getting into Bollywood? Yes or no? कभी इतना लंबा इतना बड़ा सोचे अपन Sorry? अमरीना जी getting I was just asking him कभी इतना बड़ा सोचे अपन I was just to be very frank and open I'm saying this recognized by so many of these people on this so small scale that is only so much I said in the earlier before कि that is more than overwhelming for us कि कभी हम लोग इतना कुछ सोच के नहीं थे कि मतलब we will think of such a larger scale कि इतना लंबा जाएंगे या फिर ऐसे मूवीज या फिर ऐसा कुछ ऐसा कभी भी this was not part of a plan. This was always our hobby which we took as making Okay. videos and So everything. let's turn the interview हाँ into such a style. I can say now you created your passion. passion exactly Yes, you created your passion, and then जी it's kind of a hobby, and now you're projecting to the yes world. projecting to the world exactly we Yes. never thought कि जो है सुना we will be streaming down our future into this कि कल को अपने को इसमें जाना है इसमें उतरना है so we have to do it like this नहीं 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 ऐसा मैं आपसे वही तो पूछ रही ना आप नहीं कभी सोचे भी लेकिन no no कभी no 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 आउट ऑफ अ ब्लू अगर कभी ऐसा आपके पास एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन थोड़ा सा लाइक एक बेल रिंग हो गई एंड some of your if we do get calls for बहुत ज्यादा है लेकिन हैदराबाद मूवी इंडस्ट्री से we did get mashallah calls good from good yes good one of the Hyderabadi productions we did get call from them like are you guys willing to have some of the segment in our production or some of the segment in our movies so recently when we were there in Hyderabad in November so at the time of our first interview happened in Siyasat Delhi so wo time pe jo hai we got some calls from Hyderabadi productions like mashallah we want to cast you people मगर हमारा सबसे मेन जो एक ड्रॉबैक आ जाता है what you say कि we are here in Saudi and yes those people are in Hyderabad so that's the reason so इस वजह से and our families are here so ऐसा भी नहीं है कि जो है we just go there to Hyderabad and just shoot for a couple of days and come back it's not like that also so that's the reason ऐसा कभी we didn't give a a second thought about it ऐसा कुछ नहीं है लेकिन in future अगर कुछ ऐसा आता है for us both of us in Hyderabad productions ही हो या फिर Bollywood में ही कुछ ऐसा हो तो of course as we far will as not comedy concerned yeah comedy yes as concerned long as and comedy of course concerned it's अच्छा एक yes और एक मजे की बात आपके वीडियोस में मैंने महसूस की है कि that being Hyderabadi you haven't tried not your best but somehow made it a point that Hyderabadi language 99% नहीं यूज हुई है but in spite of that your videos are funny इसके ऊपर थोड़ी रोशनी yes डालिए प्लीज अगर मेरा सवाल सही है basically तो Amrina ji actually if you know that usually in a country in India में usually जो है सुना हर चीज से you get related to Hyderabadi if people say they have only two words coming to them it's like how nako exactly that's why I'm asking अरे you आप लोग this हैदराबाद से अच्छा हो नको बोलते जी आपका वीडियो चलेगा सर आ गया नहीं लेट कम तो हाँ हाउ बोलते नको बोलते इट्स लाइक दिस तो वो हम लोग को एक डिफरेंट उसमें बताना था कल्चर के इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ नको या फिर इट्स नॉट अबाउट दो स्लैंग्स व्हाट पीपल यूज देयर
हर जगह की अपनी खूबी है, खासियत है, ठीक है। True, हैदराबाद में जो है सो true. दक्कनी दक्कनी जो है सो आपके दक्कनी जो हमारी बातचीत है, बोलचाल है, आपको मालूम है कि लखनवी बोलचाल के बाद जो है वो सबसे ज्यादा अपने पास उर्दू फसी जो बोली जाती है वो हैदराबाद में बोली जाती जी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है। तो मगर स्टिल जो है सो वी डोंट ट्राई टू ब्रिंग दैट थिंग ऑन यू नो ऑन द क्या बोलते हैं, आपको पर्दे पे नहीं लाना चाहते कि बहुत Hmm. ज्यादा जो है सो हाउ बोल रहे हैं, नको बोल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक स्लैंग नहीं लाते। जो भी अपने घर में इस्तेमाल होती है, व्हाट वी स्पीक इन आवर होम्स, इन योर होम्स, वो है दैट्स द स्लैंग वी स्पीक ऑन द वीडियोस एज वेल। वी डोंट ट्राई टू अडॉप्ट मोर ऑफ दैट स्लैंग फ्रॉम द स्ट्रीट्स, या ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप इफ यू ब्राउज थ्रू अदर वीडियो, I know. like they particularly focus on that Yes, only. yes, yes, yes. Hyderabadi videos dalte, are how miya, kaiku miya. Why are Yes, you yes. stressing on that? Exactly, Not too exactly. much. Concern, concentrate on the writing, concentrate on your content. That's more than enough. Language is just a small medium to project your True, whatever your true, true. words are. True. Just like So that's music the is a thing. medium to, Music medium just वही to है. show that बिल्कुल, everybody can move बिल्कुल, their head. The music is on, बिल्कुल, whatever it may बिल्कुल, be. Very बिल्कुल, well said. बिल्कुल, Very well. By the बिल्कुल. way, कौन सी coffee पी रहे हैं इबादुर? Can I have the name of it? अज्जू भाई कुछ भी ला लेते, मैं पी लेता हूँ। कुछ ही लाए अज्जू भाई आप? मेरे ख्याल से कैपुचिनो है उसका दिया है। कैपुचिनो। जी हाँ, ओके, अब कैपुचिनो तक है के ये। आपके जितने वीडियोस हैं उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट लाइन आप दोनों की अगर कोई है तो थोड़ा सा इफ यू कुड शेयर इट विद आवर व्यूअर्स दैट विल बी मोर देन गुड टू नो. हम्म, बारिश का पानी। बारिश का पानी हैज बीन अ वेरी यू नो क्या बोलते हैं आपको, हिट डायलॉग, वन ऑफ द हिट डायलॉग फ्रॉम आवर स्किट्स। वो ये था कि अरे मामू तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम्हारे घर में बारिश का पानी घुस गया करते। कैसा कुछ था, चाबी मेरे पास है। This was the one. ओके, चाय मेरे पास है। नाइस एंड नाइस. yes, एंड वन मोर, एक और कौन सा था अपना सबसे वो वाला, वन ऑफ द हिट डायलॉग ये था, अच्छा मामू मैं मोहसिन भाई को बोल दिया बारबेक्यू में उन्होंने दाल ला रहे बोले, मैं चावल ला रहा हूँ, तू क्या ला रहा? मैं मेरे छोटे भाई को ला लेता हूँ। ओके, वाओ, गुड गुड, मेरा वेरी वेल सेड. सम नहीं लेकिन एक चीज है, बारिश का पानी जी। घुस गया बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन चाबी मेरे पास है कोई नहीं बोलता. दैट्स समथिंग वेरी जी हाँ, इंटरेस्टिंग. नहीं सच में वेरी तो नाइस. आई ये मीन इट्स गुड टू हियर बोथ ऑफ यू. जी जी वेल जी। अजहर, व्हाट डू यू वर्क एज? आपका प्रोफेशन क्या है? व्हाट डू यू डू? I work in an ecom noon.com पे. I am a branch manager of two warehouses. I'm working since like 8 years. I'm working in माशाल्लाह, this अल्लाह ecom कीप यू industry. बरका. Ameen, इंशाल्लाह. ameen, ameen. माशाल्लाह. एंड यू? I work in a low current company, Unitech IT company है. So I माशाल्लाह. work as an operations manager. MashaAllah, good, good. Allah bless both of you. Well, it was a Ameen ya Rab, pleasant ameen ya Rab. talking to both of you, and thank you for your Ameen ya Rab. valuable You same time. here. And Mutual. I truly understand it's a tight schedule. You look tired, but still you took out time for me. Allah bless you with Thank you so loads much. and loads of happiness and prosperity. Inshallah, Allah give you barakah in everything you Jazakallah. do. Because Jazakallah concept, khair. idea, passion, hobby, and everything Jazakallah. is involved in that, and that's make a sense to actually smell it out in a different way. So all the viewers, Indeed. before leaving, both of them would like to have a short message आप दोनों की तरफ से सारे viewers के लिए. अगर कुछ कहना है तो please कह दीजिए. Well, nothing else. Thank you so much for watching this podcast, and keep supporting, keep loving, and keep subscribing to our channel, and do subscribe. Like अमरीना जी को तो जो है सो तारीफ के कोई मोहताज नहीं है माशाल्लाह. अरे नहीं नहीं तो नहीं. आप ही हमारे चैनल के लिए कुछ बोल दिए तो शायद हमारे कुछ चैनल बढ़ेगा. So नहीं नहीं that's नहीं. it. And message for the youth is always like don't consider yourself कि जो so you have limited access, you're limited, don't keep yourself limited मत रखिए अपने आप को. If you have something in yourself, there is always a medium of internet. आजकल तो social media platform has gone so high, and social media platforms has a very different marketing level आजकल हो चुकी है. So whatever talent, whatever hobby, whatever passion you have, just try to bring it on to the social media. As far as people are liking it, inshallah you will be successful, inshallah. And keeping your work and your studies aside. Aside. Not like I'm Yes, not going that's to study. important. Okay, Yes. because we Yes. are both educated and we are working, and now we are doing all these things because Yes. most of the kids
nowadays come and tell me that I'm going to make a channel. I was thinking like I also get the subscribers. I said, please complete your studies, then come to me. I will guide you. Mashallah, yes, Okay, yes. so my message to youth That's people is yes. that first of all your Focus on your studies, focus then on your career work, as well. and then Yes. this whatever talent you have, come up with this. Inshallah, everything will be good and you will be successful. True, very well said. Well, viewers, it was a pleasant, altogether session with both of them. Truly, they are very much adamant about Thank you. whatever they are Thank doing, you. and I wish them success in every walk of life. And Jazakallah. as whatever they have said, first concentrate on your career, on your education. Yes. Automatically, when you do something with your heart on, with clarity, Almighty is there to support you, like the way Yes. He's doing it for them. So my Amen. all love and wishes for both of them, and thank you once again for getting on board with me. Do subscribe to Deccan Drolls and to Ibadur. I love that hair part of it. It's very fascinating to know, when I actually wanted to see that, and he's in front of me with this one on, but he could have worn that Inshallah, next basically. time. Inshallah, next time. Wishing you good luck. Inshallah. And viewers, Thank you so do much. tune into my sessions with another person coming in on board very soon. But I'm wishing Deccan Drolls, Azan and Ibadur, all the best wishes from around the Thank you world. so much. Thank you so much. Thank Salaam you so alaikum. much. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you.